All right. So okay, fine. Okay. Just once confirm that I'm audible to you so that we can continue. Okay. Okay. Fine. Thank you. So yeah, this is the thing that we have seen in the last class. All right. So it was type 1 order to system, and we are going to analyze this system, and we will take one or two examples based on this, so that you will understand why exactly we are learning this, or why exactly we are like exploring these such hard terms like zeta and or xi and wan and all that. Okay. So this is a general form of type 1 order to system. Okay. So now now I hope you guys are clear how we identify type of the system and order of the system that we have already seen. So to identify the type of system, first of all we take negative unity feedback of the system, and we take open loop gain. That means the thing that is in this box here. On the basis of this, we decide the type and order of the system. Okay. Denominator is more important. So here the terms that is omega n is natural frequency, and xi is a damping ratio, damping factor, and this would be the closed loop transfer function of the system, that is C of s upon r of s is equals to omega n square divided by s square plus 2 xi omega ns plus omega n square. So next thing that we are going to learn is we are going to learn unit step response of the system. Yeah, now what does that mean? Unit step response means at input we provide the unit step signal. So what is unit step signal? First of all, let me just write here, that is unit step response. All right. And unit step response means if we talk in time domain, the signal will be u of t, and if we convert it into frequency domain, that would be 1 by s. This is the Laplace transform of u of t. You all know that, I hope. So at input, when we give this thing, we get some output or we get some response, that is c of s. All right. So that would be unit step response. So there is a very long what we can say proof of this thing. मतलब इसका जो derivation है वो बहुत लंबा है, and since we have very less time, so that I'm not going to explain you the whole response or the whole procedure. I'm just giving you the final answer, that if we take the response in time domain, that means c of t output, c of t will look like this in bracket 1 minus e raised to minus xi omega n t divided by under root 1 minus xi square into sine omega d t plus 5 and multiplied with u of t. So that would be the response. अभी ये सारी चीजें आपको मतलब रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जो टर्म्स है वो टर्म्स समझ लो, उतना ही काफी है, ठीक है? Now this is the response, and a few more things that I would like to tell you is, now what is this omega d? We have already seen omega n. All right. ओमेगा एन हमने देख लिया है यहाँ पे. अभी ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा डी को हम कहते हैं डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी. ओमेगा डी, प्लीज राइट इट. ओके. मैं जब बता रहा हूँ ना तुम लिख लो. सो ओमेगा डी इज ओमेगा एन into under root 1 minus xi square. So that is called as
damping frequency. So the question might directly come कि find out the damping frequency for this system. So हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा डी इज इक्वल्स टू ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर, ये ऐसे होता है. ओके, नाउ अगेन व्हाट इज जाई हियर. अगर हमें जाई की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, या फिर ये जो फाई है जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना फाई, ये फाई की वैल्यू अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए, सो हाउ डू वी फाइंड आउट दैट. सो कॉस 5 इज इक्वल्स टू जाई, जिसे कि हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग रेशो भी कहते हैं. सो यही चीजें इंपॉर्टेंट है, यही चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है. एंड sin phi will be equal to under root 1 minus cos square phi, or it is again equal to under root 1 minus xi square. So ये sin phi है, ये cos phi है. सो अगर आप इनवर्स लोगे, सो साइन इनवर्स से अगर दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे, या फिर कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स से इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी. सो फाई भी निकालने के लिए पूछ सकते हैं. सो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि फाई की वैल्यू क्या आ सकती है. फाई कैन बी आइदर कॉस इनवर्स जाई, और इट कैन बी साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर. राइट. सो ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है. तो ये सारी चीजें मतलब आपको याद ही होनी चाहिए कि cos फाइव इक्वल्स टू जाई होता है, sin फाइव इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर होता है, और फाइव की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो क्या करने का है, डब्ल्यू डी दैट इज ओमेगा डी, या फिर डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी अगर निकालने के लिए बोला जाए तो क्या फॉर्मूला. ये सारी चीजें आपको याद ही रखना पड़ेगा. ओके, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है. नाउ ये जो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा है फॉर्मूला के फॉर्म में, ऑलराइट, यहाँ पे एक ब्रैकेट देना जरूरी है, क्लोजिंग ब्रैकेट इज नेसेसरी. सो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो सी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ साइन फंक्शन which is multiplied by a exponential function, and again it is multiplied with unit step function. That means this function will be lying on the right side only, or um, it will be on the positive side only. All right, so if I draw this, so the graph will look like this. So this is the reference point, we can say, or it is 1, since we are adding 1 here. As you can see this is 1. So our reference point will be from 1 instead of 0. And the graph will look like this. This is for sine function. And this is for exponential function. Like it will be decreasing in the exponential manner. Right. So graph kuch aisa dikhega. And we have already seen this type of a system is called underdamped system. Right. So abhi जाई जो है, जाई दैट इज डैम्पिंग रेशियो, जाई का और सिस्टम के अंडर डैम्प होने का या फिर ओवर डैम्प होने का क्या यहाँ पे रिलेशन है. तो यहाँ पे रिलेशन ये है, लेट अस सपोज वैल्यू ऑफ जाई इज बिटवीन 0 and 1. In that case the system will be under damped as well as it would be stable. ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखो. Now if the value of xi is negative, then the system will be unstable, and if the value of xi is positive, then the system would be stable. तो यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी ही ज्यादातर पूछने के लिए कहा जाता है. सो जाई प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. ठीक है, जाई का जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में, वो बहुत ज्यादा है. सो इसके लिए हमें नॉट ओनली थ्रू वन वे, वी हैव टू फाइंड सर्टेन वेज टू फाइंड आउट जाई. तो यहाँ पर हमारे पास जाई फाइंड आउट करने के लिए कई सारे वेज है. सो जब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे ना, व्हेन आई विल टेक वन एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेट जाई एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ में भी हमें कई सारी चीजें पूछी जा सकती है. तो सबसे पहले जो होता है वो होता है राइज टाइम. राइज टाइम पूछा जा सकता है आपको. सो हाउ डू वी कैलकुलेट राइज टाइम? इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय टी आर, दैट इज राइज टाइम. सो इट इज द फॉर्मूला फॉर दिस इज
टी इज इक्वल्स टू या फिर टी आर इज इक्वल्स टू एन पाई माइनस फाइव डिवाइडेड बाई ओमेगा डी. Okay, so what is rise time exactly? So the point at which our function touches the reference point. Okay, the time at which. तो ये जो टाइम है ना, इसे हम राइज टाइम कहते हैं, टी आर. ये भी जो है ये भी राइज टाइम ही है, लेकिन ये सेकेंड साइकिल के लिए है. ओके, सो यहाँ पे एन की जो वैल्यू है, फॉर दिस राइज टाइम एन विल बी वन, फॉर दिस राइज टाइम एन विल बी टू, एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमें, मतलब जिस किसी इंस्टेंस पे राइज टाइम निकालने के लिए बोला जाए, वहां पे हमें एन की वैल्यू रखनी है, फाइव की वैल्यू हमें रखनी है, फाइव की वैल्यू मोस्टली दी रहेगी, या फिर जो हमें फॉर्मूला दिया है ना, तो उसमें से हम फाइव की वैल्यू मतलब निकाल पाते हैं. जब हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं. ओके, सो दैट इज बीइंग सेड. उसके बाद में जो आता है वो है पीक टाइम. पीक टाइम यानी कि द टाइम for this function to reach at the peak point, right? So this would be peak point. This is represented by tp, and its representation or its formula is n pi by omega d. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें फाई को एलिमिनेट करना है, n pi by omega d. So this would be the first peak time, this would be second peak time, although it is like minimum function, but it is still considered as a peak time. This is third, एंड सो ऑन. तो अकॉर्डिंगली हमें एन की वैल्यू रखनी है और पीक टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है. एंड ओके, सो नथिंग एल्स. आई डोंट थिंक कि आपको इससे इसके अलावा कुछ पूछा जा सकता है. देयर आर सर्टन थिंग्स लाइक मैक्सिमम ओवरशूट एंड मिनिमम ओवरशूट, बट आई थिंक द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इज बीइंग आस्क्ड थोड़ा सा कम है, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं. तो जो डिटेल वाले कंसेप्ट है आप मतलब कहीं से पढ़ लेना, ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड. So next thing is time constant. So for particularly for this system only, type 1 order 2 system which is under damped, इसके लिए time constant t जो होता है वो होता है 1 by xi omega n. So this is time constant. टाइम कांस्टेंट भी हमें निकालने के लिए पूछा जा सकता है. ओके, सो ये सारी चीजें आप लिख लो. After that, what is the thing? Okay, so let us suppose this is not a type 1 order 2 system, and this is any random system. So for such systems, how do we find out um, टाइम कांस्टेंट? ठीक है, टाइम कांस्टेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो यही रहेगा, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस टू जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ऑलराइट, सो स्टेबिलिटी के लिए मोस्टली हम जो है डिनोमिनेटर ही यूज करते हैं. ठीक है, सो डिनोमिनेटर इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर. ऑलराइट, सो दिस इज एस स्क्वायर द टू जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. सो यहाँ पे जो हमारा ए है वो रहेगा वन, बी जो है वो रहेगा टू जाई ओमेगा एन, एंड सी जो है वो है वन अगेन. नो सॉरी, इट इज नॉट वन, इट इज आई गेस ओमेगा एन स्क्वायर. ओके, सी जो है. सो वी नो दैट हाउ डू वी फाइंड आउट रूट्स. सो रूट्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए. ऑलराइट, सो ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पे रख दोगे, अभी s इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस बी की वैल्यू जो है वो है टू जाई ओमेगा एन प्लस और माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए. सो ए क्या है, ए सिर्फ वन ही है, सो मैं यहाँ पे सिर्फ टू लिखूंगा. एंड आई एम नॉट सॉल्विंग द थिंग दैट इज डिटर्मिनेंट. यहाँ पे जो लिखा है ना मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं वो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ. टाइम कॉन्स्टेंट निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ. ऑलराइट, सो इट वुड बी लाइक समथिंग, ये जो टू जाई ओमेगा एन है ना, सो ये इसमें से टू टू कट जाएगा, सो इट वुड बी माइनस जाई ओमेगा एन, माइनस जाई ओमेगा एन, इट वुड बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू only. So this thing is not important. This thing is not important. Only the real part.
दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट. सो ये जो रियल पार्ट रहेगा किसी भी इक्वेशन का, ओके, जो न्यूमरेटर वाला इक्वेशन रहता है ना, पोल्स वाला, तो उसका जो रियल पार्ट है, सो टाइम कांस्टेंट इज ऑलवेज -1 बाय स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट रियल पार्ट ऑफ द पोल. ठीक है, तो ये पोल है, पोल का जो स्मॉलेस्ट रियल पार्ट रहेगा, 1 बाय दैट वुड बी आवर टाइम कांस्टेंट. तो अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में इसे डालते हो, सो -1 अपॉन -जाई ओमेगा एन, सो दैट इज 1 बाय जाई ओमेगा एन. ठीक है, तो हमने यही सिस्टम लिया था. मैंने यहाँ पे टाइम कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया था, बोथ आर सेम. राइट. सो जैसे हमने सेटलिंग टाइम देखा था इन द लास्ट क्लास, आई थिंक अबाउट इट वाज 5 RC, बराबर ना? कैपेसिटिव सर्किट के लिए 5 RC का टाइम कांस्टेंट था. एनी मैसेजेस इन द चैट बॉक्स? नो. ऑलराइट. सो सेटलिंग टाइम यानी कि द टाइम एट विच, और द टाइम विच सिस्टम टेक्स टू स्टेबलाइज, या फिर स्टेबल बनने के लिए जो टाइम सिस्टम लेती है, उसे हम settling time कहते हैं. So for these system, in control systems, it is not 5t, it is settling time is 4t. So यहाँ पे 4t अगर रहेगा तो 2% एरर रह सकता है, एक्चुअल डिजायर्ड आउटपुट एंड जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें. और अगर ये 3t है, सो इट वुड बी 5% एरर. ठीक है, तो यूजुअली 4t इज द सेटलिंग टाइम. राइट. सो अभी हमने ये सारी चीजें यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख ले हैं. मैंने कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है आपको डेरिवेशन कोई भी, सिर्फ फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवा के दिए हैं. सो जैसे ही आप सिस्टम देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको प्रोसीड किस तरीके से करना है. लास्ट थिंग दैट इज रिमेनिंग इन माय पर्सपेक्टिव इज डिले टाइम. डिले टाइम, दैट इज टीडी. सो डिले टाइम क्या होता है? डिले टाइम होता है टाइम रिक्वायर्ड टू, आई होप यू आर राइटिंग, यू ऑल आर राइटिंग, ओके. टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 50% of the desired output is called desired output is called delay time. And formula for delay time is TD is equals to 1 plus 0.7 xi by omega n. So ये फॉर्मूला है सेकेंड्स. ओके, ये सेकेंड्स, सारे के सारे जो टाइम्स है वो सेकेंड्स में ही है. ठीक है. सो इतने सारे फॉर्मूलाज तो मैंने आपको लिखवा दिए. नाउ विल टेक वन एग्जांपल. Just a second. So the example is, our system is given as C of S question. C of S upon R of S is equals to 4 upon S square plus 2S plus 4. So this is the system, and they are asking us determine damping frequency, natural frequency. All right, just a second. Natural frequency. After that, damping ratio. After that, TR, TP, and TD. Okay, so these things we need to calculate. So damping frequency means, first of all, omega D. Natural frequency is omega n. Third one, damping ratio is xi. And fourth one, TR, TP and TD. ये 6 चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है. ओके, सो ये जो इक्वेशन है, इसको आपको कंपेयर करना है दिस इक्वेशन के साथ में. ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 xi ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ठीक है. सो सबसे पहले जो चीज हम निकाल सकते हैं, दैट इज ओमेगा एन.
ओमेगा एन को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? सी, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे दिया है, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। सो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू आएगा प्लस और माइनस टू, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव सो इट इज टू। सो पहला जो हमारा आंसर है ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 2 हमने फाइंड आउट कर लिया है। राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग इज ओमेगा एन तो हमने निकाल लिया, अभी उसके बाद में हमें निकालना है डैम्पिंग रेशियो। ऑलराइट, सो जस्ट अ सेकंड, डैम्पिंग रेशियो, अभी हम डैम्पिंग रेशियो किस तरीके से निकाल सकते हैं? एनी आइडिया? यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करो, विच टर्म कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट जाई डैम्पिंग रेशियो? एनी आइडिया? आप लोग कुछ सोच पाते हो कि सर इस तरीके से हम डैम्पिंग रेशियो या फिर जाई निकाल सकते हैं? ओमेगा एन आपके सामने है, 2s। ऑल राइट, या शार्दुल, वेरी गुड। सो ये जो बीच वाली टर्म है ना 2s, सी this is 2s here and this is 2 xi omega n s here, right? So s से s छोड़ दो, so 2 xi omega n is equals to 2 है। हम यहाँ पे तीसरी टर्म निकाल रहे हैं, that is xi। so 2 is equals to 2 xi omega n, right? so ये 2 इधर चला जाएगा तो वो कट जाएगा, so 2 cancel, so it would be xi is equals to omega n, 1 by omega n। so omega n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, so 1 by 2 that is equals to 0.5। so यहाँ पे xi की वैल्यू क्या है? xi की वैल्यू एक तो 0 और 1 के बीच में है, alright, it is between 0 and 1 and it is positive as well, so that means this system is underdamped as well as, or the response is underdamped as well as it is stable। alright, now next thing, ओमेगा डी किस तरह से निकलेंगे हम? डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाल सकते हैं? एनी आइडिया फॉर ओमेगा डी? गाइस एनीवन? ओमेगा डी के लिए आपने फॉर्मूला लिखा है? आई नो यू कैन नॉट राइट इन द चैट बॉक्स, सो यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड टेल। हैव यू written the formula for omega d? All right, somebody has written something. Okay, 1 minus the square root of xi, 1 minus xi square। okay, ठीक है, यही है ओमेगा डी का फॉर्मूला, यही है ना, हमने सीखा है ना कि ओमेगा डी इज इक्वल्स टू ओमेगा एन इंटू 1 माइनस 1 माइनस xi स्क्वायर। सो ये क्या आएगा? ओमेगा एन है 2 अंडर रूट 1 माइनस xi हमारा है 0.5 स्क्वायर, सो इट वुड बी 2 इंटू 1 माइनस 0.25, 0.5 का स्क्वायर जो है वो 0.25 होता है। सो ओमेगा डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.75। सो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई नाउ? अगर हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है फाई की, हैव यू एनी आइडिया एंगल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? सी वी हैव हियर वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो दैट इज जाई। जाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 0.5 या फिर हमने निकाली है 0.5। सो cos phi is equals to xi होता है, cos phi is equals to xi होता है, right? If I'm not wrong, so cos phi is equals to xi, that means if we multiply both side by cos inverse, so phi will be equal to cos inverse of xi। तो यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग उसे निकाल सकते हो फाई की वैल्यू, ठीक है? तो फाई अगर निकल जाता है तो बाकी सारी चीजें तो निकल ही जाएंगी। सो कैन यू कैलकुलेट फाई हियर? If you have calculators, please try to calculate phi. If you don't have calculator, I will. Oh, is it pi by 3? All right. Shubham and Shardul, you please also verify. And if you have any doubt, you can ask me. Okay. There is no as such problem. All right. Fine. So
फाई की वैल्यू यहाँ पे हमें पाई बाय 3 मिल रही है, ठीक है ना। सो फाई की वैल्यू की जरूरत क्या है अभी हमें? वाई वी नीड फाई? बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट these things, टी आर, टी पी, टी डी, isn't it? सो जब मुझे टी आर निकालना है, जब मुझे टी आर निकालना है, तो टी आर के लिए फॉर्मूला है पाई माइनस फाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। सो पाई तो पाई ही रहेगा। फाई की वैल्यू जैसे कि रमन ने बोला पाई बाय 3 है, तो हम मान लेते हैं पाई बाय 3 है। एंड ओमेगा डी वुड बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 0.75। ओके, सो इसको फर्दर कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, मतलब करना ही पड़ेगा। अगर तुमको एग्जैक्ट टाइम टाइम पीरियड निकालना है ना, तो इसको तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ओके, सो यू कैलकुलेट इट, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। ऑलराइट मक्का, यू, मक्का तुम लास्ट कुछ क्लासेस में नहीं थे, व्हाई इज इट सो? सी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ऑलराइट। मतलब अगर दो स्टूडेंट्स भी रहेंगे ना, देन आल्सो आई विल टेक क्लासेस, नो प्रॉब्लम। बट आई फील कि मतलब इतना सारा जो मटेरियल है ना इंटरनेट पे, इतना मतलब गेट एकेडमी, मेड इजी एंड ऑल दोस थिंग्स, एस एकेडमी, सो इन सारी चीजों को मैंने बहुत ज्यादा फॉलो किया है एंड आई हैव मेड माय कॉम्पैक्ट नोट्स। ओके, तो आई फील कि मैं थोड़ा सा अच्छे से नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट तरीके से पढ़ा सकता हूँ, मतलब आपका टाइम बच सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि आप लोग अटेंड करो लेक्चर्स, क्या प्रॉब्लम है? ऑलराइट, सो मक्का प्लीज मेक श्योर कि attend the classes regularly. See, Shubham, Raman, and Shardul, these people are attending classes regularly, and I'm very happy with them. At least they are using what they have paid. Okay, so I would be happy if you can join every class. Alright, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है मक्का? अगर तुमने कुछ पढ़ाई नहीं किया है ना, मतलब इस बारे में, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अगर तुमने कुछ पढ़ रखा है पहले से, तो यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। ऑलराइट, सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। TR will be this rise time. Okay, this is for first instance. अभी यहाँ पे अगर आपको दूसरे इंस्टेंस के लिए निकालने के लिए बोला जाए, या फिर तीसरे, तो यू कैन डू इट। यहाँ पे सिर्फ हमें n की वैल्यू पुट अप करनी है। ऑलराइट, नाउ लास्ट थिंग वी नीड टू फाइंड आउट, दैट इज TP। नो लास्ट थिंग, इट इज सेकेंड लास्ट थिंग, TP। सो TP के लिए फॉर्मूला तो बहुत आसान है। TP के लिए फॉर्मूला है TP इज इक्वल्स टू n पाई बाय ओमेगा डी। सो n की वैल्यू 1 है, पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी, ओमेगा डी की वैल्यू 2 × 0.75 है। ठीक है, लास्ट वन दैट इज TD, टाइम डिले, डिले टाइम, या फिर डिले टाइम जिसे हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला है 1 + 0.7 जाई डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। सो हमारे पास यहाँ पे 1 + 0.7, जाई की वैल्यू आई गेस 0.5 है, एंड ओमेगा वेन की वैल्यू 2 है। So if you can calculate, I think it would be 1 + 0.35 divided by 2. So 1.35 divided by 2. So this should be delay time. अगर कुछ मैथमेटिकल एरर हो जाता है, सो प्लीज करेक्ट इट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो जो कुछ हमने इतना रामायण महाभारत पढ़ा था, मतलब पिछले कुछ 15-20 मिनट में, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है एग्जाम में। ऑलराइट, इज इट क्लियर गाइस? प्लीज गिव मी वन रिस्पॉन्स सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, समझ में तो आया ना, मतलब एग्जैक्टली करना क्या है ना। वन मोर क्वेश्चन वुड बी देयर आपके एंड से कि सर, इट इज नॉट नेसेसरी ना कि यहाँ पे जो आपने 4 लिखा है दोनों जगह पे, नॉट नेसेसरी कि हमें दोनों जगह पे 4 मिल जाए। बट लेट मी टेल यू, हमने इस 4 को कहीं पे भी यूज किया? डिड वी यूज इट एनीवेयर? जो न्यूमरेटर में जो 4 लिखा है, डिड वी यूज इट एनीवेयर? वी वेर वी वेर जस्ट रिलाइंग ऑन द डिनोमिनेटर। ठीक है, सो वैल्यू जो है हमें डिनोमिनेटर की कंसिडर करनी है इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो यहाँ पे जो 4 की जगह पे कुछ अगर अलग है, 100 है, 10 है, सो दैट इज बिकॉज जो गेन के होता है ना, तो के इज मल्टीप्लाइड विद दैट ओमेगा एन स्क्वायर, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज दैट। बट इन द डिनोमिनेटर इट वुड बी ऑलवेज ओमेगा एन स्क्वायर ओनली, और वी कैन मेक एडजस्टमेंट्स, वी विल टेक दैट काइंड ऑफ एग्जांपल्स एज वेल। Alright, so this was the underdam response or unit step response for type 1 order to system। और मोस्टली गेट एग्जाम का फोकस जो है वो इसी सिस्टम पे रहता है, एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बाकी भी मतलब यू कैन डू इट ट्रायल एंड एरर की। मान लीजिए कि हम अभी हमने स्टेप स्टेप सिग्नल इनपुट पे दिया, सो
यू कैन टेक इम्पल्स सिग्नल, सो इम्पल्स सिग्नल आप इनपुट पे दो, बाद में फाइंड आउट करो कि क्या क्या चीजें हमारे सामने आती है, सो यू कैन डू लाइक दिस, ओके. सो थिंग्स मे चेंज बट दिस इज important, I felt this is important, so that's why I told these things to you. So now few more things I would like to tell you about the value of xi. So जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे, okay, are we running out of pages? We are running out of pages on the software itself, all right. So range of xi and location of poles, then unit step response, US response, and last one, type of system. Very important, guys. If you remember this, you don't need to remember all other things. It would be much easier for you. अगर xi की वैल्यू आती है 0 और 1 के बीच में, so that means poles are in the left half of the graph. Response would be something like this. We have already seen. Alright, ये ऐसे कुछ response रहेगा. कम होता होता. Sorry, I made a mistake. Should be like this. So this is under damped system. Alright. So it is under damped as well as stable. मतलब जाई की एक वैल्यू से हम ये दो चीजें, तीन चीजें बता सकते हैं कि लोकेशन ऑफ पोल जो है वो लेफ्ट में है और जो सिस्टम है वो अंडर डैम्प्ड है, स्टेबल है. इफ द वैल्यू ऑफ जाई इज बिटवीन -1 एंड 0, 0 से छोटी है, सो it is clear that poles are on the right side and the graph would be like this. And from graph itself you can conclude that although it is under damped itself, but it is unstable. Okay, and if xi की वैल्यू 0 आ जाती है, सो प्योर इमेजिनरी मतलब क्या? लोकेशन ऑफ पोल्स इमेजिनरी, पोल्स इमेजिनरी है मतलब क्या? एनीवन गाइस? इमेजिनरी पोल्स है मतलब दे आर नाइदर ऑन राइट साइड नाइदर ऑन लेफ्ट साइड, they are on the y-axis itself. Very good. They are on the y-axis itself. So in such cases, the response would be like this. I'm really sorry for the drawings. I'm very bad at it. Okay. So the response will be like this. Sustained oscillations. Okay. And it would be underdamped and sustained oscillations. मतलब इस केस में हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है. ऑलराइट, सो ये सारी चीजें हो गए. सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा. सो उस एग्जांपल्स की मदद से आप मुझे बताना कि वेदर दिस सिस्टम अंडर डैम्ड है, ओवर डैम्ड है, व्हाट इट इज. ओके, ओवर डैम्ड का तो हम यहाँ पे मतलब पढ़ेंगे ही नहीं. तो मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ. तो आपको उसमें ओमेगा एन फाइंड आउट करना है, जाई फाइंड आउट करना है, एंड इफ पॉसिबल ओमेगा डी फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, so let me just give you a few examples. So the first example is, guys, first example 1 is 4 upon s square plus 8s plus 4. Find out omega n and xi. Can you find out? Please try and find out. Omega n and xi. Everyone. All right. Is it, Raman? Omega n is 2 and xi is 4? No, I don't think so. 2, 2. Okay. Okay. Okay, Raman. All right. So ओमेगा एन है 2 एंड जाई है 2.
So guys, we have already seen that मतलब जाई की रेंज हमने कहां से कहां तक देखी है, 0 से 1 अगर है तो अंडर डैम्प्ड है एंड स्टेबल है सिस्टम। 0 से -1 के बीच में अगर है तो अगेन इट इज अंडर डैम्प्ड बट इट इज अनस्टेबल। एंड इफ जाई इज इक्वल्स टू 0 है तो सिस्टम कैसा है, इट इज नाइदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस विल बी द रिस्पॉन्स। Now here you have calculated the value of xi and it is 2, which is greater than 1. So in such cases, what is the nature of the system, or what is this response, what is the nature of the response? It is overdamped. Very good, Makka. Okay, it is overdamped. So if xi is greater than 1, if xi is greater than 1, then the system is overdamped. But since xi is positive, it would be stable. Okay, and if xi is less than -1, it is overdamped and system would be unstable. Okay, so guys, one more example and then we can stop. Okay, so let me just find a proper example for you. Just a second, huh? Sorry for the delay. Hmm. All right. Let me just take a new page because we are running out of pages. I hope pages are available, visible. Okay, so the question is, let us suppose C of S upon R of S is equals to 4 upon S square plus 101S plus 100। एंड यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट निकालना है, ओमेगा एन तो आप निकाल ही लोगे, जाई भी निकाल लो एंड सेटलिंग टाइम भी निकाल लो। सेटलिंग टाइम फॉर 2% एरर एंड 5% एरर। सो ये सारी चीजें आपको निकालनी है, बाकी टी आर टी पी इन सब चीजों को छोड़ दो। ठीक है, सो ट्राई एंड कैलकुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा एन वुड बी वेरी इजी। Omega n would be 10. Very good. Xi would be no, Makka. It is not 2. It is 10. All right, Shardul. Xi would be 5.5, 5.05. All right. And what will be the nature of the response, Shardul? What would be the nature of response? Response or the system, whatever you can say. If the value of overdamped, all right, and stable or unstable, it's stable. All right. So find out time constant. Now don't use that formula that I have told you, 1 by xi n. That formula will not work because that formula was for underdamped systems. This is overdamped system. So वो formula आपको use नहीं करने का, कौन सा 1 by xi omega 1 वाला. It may work. I don't say like it won't work, but it may not work in some cases. So we have to use the universal thing that I have told you. टाइम कांस्टेंट निकालो सभी लोग।
टाइम कांस्टेंट 1 बाय आई टोल्ड यू रमन, डोंट यूज दैट फॉर्मूला, आई टोल्ड यू ना। तुमने यहाँ पे जाई जाई को ओमेगा एन से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल नॉट वर्क फॉर दिस सिस्टम। बाय सोल्विंग इक्वेशंस, एग्जैक्टली। स्मॉलर रियल पार्ट ऑफ द पोल, लिखा है ना हमने। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय स्मॉलर रियल पार्ट ऑफ द पोल। सो यहाँ पे पोल्स निकालो, सबसे पहले क्या निकालोगे, पोल्स निकालोगे। ठीक है, तो उसमें से स्मॉलर रियल पार्ट क्या है देखने का है। इफ द पोल्स आर लाइक, मतलब दे कंटेन रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट, सो इन दैट केस जस्ट टेक द रियल पार्ट ओनली, फॉरगेट अबाउट द इमेजिनरी पार्ट। बट अगर रियल ही है पोल्स, तो उसमें से छोटा वाला लेना है। सो कैन यू फाइंड आउट द पोल्स? ऑल राइट, नाइस कॉन्फिडेंस। शुभम, शार्दुल, is it going well? And guys, my humble request to you is like, if you think if you thinks that this topic should be touched, मतलब इस टॉपिक को सर थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए या फिर लीजिए, सो प्लीज सजेस्ट मी, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। ओके, although I am very busy on the weekdays, but I'm quite free on Saturdays and Sundays. Okay, 1/14? नहीं रमन, तुम क्या कर रहे हो भाई? पोल्स निकालो ना, पोल्स क्या आएंगे? व्हाट वुड बी द पोल्स? सी, फॉरगेट अबाउट टाइम कांस्टेंट। पोल्स क्या है रमन, मुझे पोल्स बताओ पहले, इस इक्वेशन के पोल्स क्या है एवरीवन? भाई सी ना, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं किया है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें पोल्स निकालना है। ओके, मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 101 s प्लस 100। तो मुझे 101 को स्प्लिट करना पड़ेगा, किस तरीके से स्प्लिट करना पड़ेगा, इसकी एडिशन जो है वो 101 आनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 100 आनी चाहिए, राइट? सो एस स्क्वायर प्लस, मैं s लिखता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे 100s लिखता हूँ, प्लस 100 लिखता हूँ, राइट? सो इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा, s कॉमन निकलेगा, s+1 रहेगा, प्लस 100 कॉमन निकलेगा, s+1 रहेगा। ठीक है, सो s+1 is one factor and s+100 is another factor. So these are factors, these are not poles. Yeah, right. Time constant is equals to 1. Now you got it. ठीक है, सो s की वैल्यू कितना आएगी, -1, और s की वैल्यू आएगी -100। ठीक है, सो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू, हमें पता है, -1 अपॉन स्मॉलर पार्ट ऑफ एक्स वाई जी वॉट एवर। सो यहाँ पे क्या है, स्मॉलर पार्ट क्या है, -1 है ना, रियल पार्ट। सो डोंट गो ऑन साइन अगेन, यहाँ पे तुम कहोगे कि सर यहाँ पे लॉजिकली अगर हम कहेंगे, सो -100 इज स्मॉलर पार्ट, राइट? मतलब अगर हम लॉजिकली जाएंगे तो -1 बड़ा आता है ना -100 से, इज इट? बट यहाँ पे हमें उसके मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है। ओके, या, सो इट इज 1। t is equals to -1 upon -1 is equals to 1. So settling time for 2% error and settling time for 5% error would be 40 is settling time for 2% error. So it would be how much, how many seconds? 4 seconds, all right. And for 5% error, it would be 3 seconds. ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने एक और चीज जो मतलब नोटिस की है ना गेट एग्जाम में। सो जो वैल्यूज मतलब आप निकालते हो ना, अभी आपने मतलब इतना झमेला किया कि सर का टाइम कांस्टेंट जो है वो 50.5% है या फिर 49.5% है। सो मोस्टली ना गेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ऐसे मतलब ऑड वैल्यूज रहते ही नहीं है, ऑड वैल्यूज नहीं रहेंगे उसमें। मतलब एक फिक्स वैल्यू आएगी, लाइक 1 आएगा या फिर 0 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा। सो मोस्टली इस तरह के वैल्यूज आएंगे, नॉट नेसेसरी कि ऑल द मतलब सारे वैल्यू इस तरह के आएंगे, लेकिन एक मतलब परफेक्ट तरीके से एग्जांपल सेट किया जाता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रहा हूँ। ऑलराइट, सो दैट इज डन विद द टाइम कांस्टेंट। टाइम डिले निकाल लो एक बार, दैट इज इट, दैट्स इट। टाइम डिले निकाल लिया तो उसके बाद में विल स्टॉप।
time delay. TD would be equal to 1 plus 0.7 xi divided by omega n. ठीक है. So xi कितना है? Xi है 10 है, is it? So it would be hmm, ठीक. हो गया. Guys, anything else pending for today? I hope it is not. And guys, I understand that we are going a little fast, but it is demand of the situation. ठीक है, हमें सारे कवर मतलब सारे सिलेबस को एक बार रिवाइज टाइप ऑफ करना है. वी आर नॉट गोइंग टू go in details. Okay, so done guys, done for today. Everyone, please respond and then we can close the class. Done? Anything, any doubt? Yeah, that's fine, Raman. That's my pleasure. More of Shubham, Shardul, Makka, done for the day. All right. So bye guys. Good night. We'll see you on the next weekend. Okay. Yeah. Bye. No problem. You can leave the class, everyone. Yeah, Makka. Makka, please be in touch. Okay. Be in touch on WhatsApp or through whatever. All right. Bye. Now you can leave the class, Makka. Yeah. Bye.